जय श्री राम। अब हम लोग कैंटो 6 सुनेंगे। मैं पढ़ने वाली हूँ। अ डिस्क्रिप्शन of the city of Ayodhya and the prosperity of its inhabitants during the reign of Sri Dashrath. While living in the city of Ayodhya, King Dashrath protected his subjects. He was well versed in the Vedas and collected all useful things. He was far-sighted and highly glorious and was loved by the people inhabiting the city as well as the countryside. He was a superlative car hero, Atiratha, or of Ikshvaku's race. He was fond of performing sacrifices, devoted to virtue, and given to the control of his senses. He was a royal sage, almost as good as a Maharshi. He enjoyed a good reputation in all three worlds. He was strong and devoid of foes. He had a number of allies and was the conqueror of his senses. He, in point of amassing wealth and other things, he was a compeer of Indra and Kubera. Just as the glorious Manu protected the whole world, so did King Dashrath. That king who was true to his word and who was engaged in the pursuit of wealth, religious merit, and sense enjoyment, protected the foremost city of Ayodhya in the same way as Indra protected Amravati. The people of that city were happy, virtuous, learned, and in sacred lore, free from greed, truthful, and contented with their own fortune. There was no household in that great city who had not stored valuable things in abundance and had not attained the objects of human pursuit, and who was in want of oxen, cows, horses, and other wealth and food grains. There was no man to be seen in Ayodhya who was sensuous, miserly, cruel, ignorant, and unbelieving. All the men and women of that city were by nature virtuous, well regulated in life, always cheerful, and faultless in character and disposition like Maharshis. There was no one in Ayodhya who was devoid of gold earrings, diadem, and flower wreaths. Nobody lacks in objects of enjoyment. There was none who did not put on a smart appearance after taking bath. No one was there who did not smear his body with sandal paste and did not use scents. Nobody was seen in Ayodhya taking unholy food, not giving alms, and not exercising control over his mind. No one was found there who had no gold bangles, a gold ornament for the neck, and armlets on his person. There was none in Ayodhya who did not maintain and worship the sacred fire and did not perform sacrifices. No one among them was petty minded, given to thieving, immoral, and impure of origin. The Brahmins inhabiting Ayodhya were ever devoted to their duties and exercised effective control over their senses. They gave away alms, pursued their studies, and were disinclined to accept gifts. There was no member of the twice born classes who was unbelieving, untruthful, lacking in knowledge of scriptures, busy finding fault with others, resourceless, and bereft of learning. There was no one in that city who had not mastered the 6 branches of knowledge auxiliary to a study of Vedas and did not observe pious vows. There was no donor of scanty gifts and no miserable man. There was none who was either distracted in mind or afflicted. There was no man or woman in Ayodhya who was devoid of splendor, nor good looking, and not loyal to the king. So,
अब आप देखिए, पहले तो उन्होंने अयोध्या नगरी की व्याख्यान की, उसके बाद उन्होंने दशरथ जी के बारे में और उनके शहर में रहने वाले, नगरी में रहने वाले सारे लोगों की व्याख्यान की। उन्होंने बोला कि दशरथ जी जो थे वो अतिरथ थे और इक्ष्वाकु के वंशज थे और उनको पूजा पाठ से काफ़ी बहुत लगाव था और वो मतलब अपने पूरे सेंसेस को, अपने 6 जो हमारे सेंसेस रहते हैं उन पे उनका कंट्रोल था। उनको बहुत लोग राज्य ऋषि भी, राजा है मगर राज ऋषि भी बोलते थे। और वो मतलब उनकी जो जितना उनके पास गुण था, जितना उनके पास ज्ञान था, उसका तुलना एक महर्षि के साथ भी किया जा सकता था। वो उनके कोई दुश्मन नहीं थे, उनके बहुत सारे साथीदार थे और वो अपने और जो मतलब धन संपत्ति जो उन्होंने अपना एकत्रित किया था उसमें उनकी तुलना इंद्र और कुबेर से भी किया जा सकता है। और वो जैसे मनु पूरे दुनिया की रखवाला थे, वैसे ही दशरथ भी थे और वो अपने शब्दों के बड़े पक्के थे और उनके मतलब धर्म पुण्य का भी वो बहुत मान रखते थे। और अयोध्या आप कह सकते हो, फिर से वही बोला गया है कि अयोध्या के बारे में आप कह सकते हो कि वो अमरावती से बिल्कुल मतलब कम नहीं था। अमरावती जितना ही उनका उस नगरी का भी ये आप मतलब उतना ही ऐश्वर्य था। और ये लोग, शहर के जो लोग थे वो सारे खुश रहते थे, बड़े अच्छे थे, पढ़े लिखे थे और न लालच था, सच बोलते थे और अपने उनके हर एक के पास जो था उससे वो खुश थे। कोई भी गृहस्थ नहीं था जिनके पास मतलब धन धान्य की कोई भी कमी थी। उनके पास पशुधन भी था, उनके पास अनाज भी था, उनके पास रत्न और सोना चांदी ये भी था। और अयोध्या में आप किसी भी मतलब बुरे इंसान को आप नहीं देख पाते थे। मनुष्य वहाँ पे किसी भी बुरी आदत उनमें नहीं थी और सारे सब अच्छे थे। एंड अयोध्या में आप ऐसे कोई भी घर नहीं था, कोई भी परिवार नहीं था जिसमें आपको ये नहीं दिखे कि उनके मतलब सोने का भरपूर था। कानों में बाली थी, हाथों में कंगन था, गले में हार थी, माथे में मुकुट था और मतलब और जो है ना, कोई चोरी वहाँ नहीं करता था, कोई भी क्या बोलेंगे, माइजरली नहीं था, मतलब कंजूस टाइप का नहीं था। सब प्योर थे, सब दान पुण्य करते थे। ब्राह्मण जो थे वो अपनी ड्यूटी हमेशा करते रहते थे और वो भी अपने आप पे बहुत उनका काबू था। अपने मतलब उनके अंदर भी कोई भी बुराई नहीं दिखाई देती थी। एंड यहाँ पे मतलब जो रहने वाले जो लोग थे उनको भी वेदों का ज्ञान था और वो भी मतलब वेद के ज्ञान के लिए जो और भी अच्छे ग्रामर का अध्ययन करना ज़रूरी था, वो उनमें भी थी। एंड कोई भी मनुष्य या पुरुष या नारी वहाँ पे नहीं थे जो देखने में अच्छे नहीं थे, जिनका एक रॉयल एक ठाट बाट था। एंड मतलब इन शॉर्ट यही कह रहे हैं कि दशरथ जी ने इतने अच्छे तरीके से अपने प्रजा की देखभाल की थी कि वहाँ पे खुशहाली ही खुशहाली थी और बुराइयाँ बिल्कुल भी नहीं थी। आज यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।